Hello students, this is Ashish Kumar Sinha, English subject teacher of DAB Public School CCL Girdi. Again, I welcome you all in our video classes. Students, today I will teach you a very interesting topic of English grammar, that is simple sentence, compound sentence and complex sentence. Today we'll discuss this topic of English grammar. So what is simple sentence? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस दैट हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड मेक कंप्लीट सेंस आर नॉन एज सिंपल सेंटेंस. What is subject? First of all, we have to know about subject and predicate. What is subject and predicate? Here, the subject of the sentence is what or whom the sentence is about. This is the subject of the sentence. What is the subject of the sentence is what or whom the sentence is about. A predicate is the part of a sentence or a clause that tells what the subject is doing or what the subject is. So this is the subject and this is the predicate. Subject और predicate होता क्या है? The subject of the sentence is what or whom. माने जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो कुछ जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है. Look at this example. The cat is sleeping in the sun. Here the cat is subject and the rest part of the sentence is called predicate. The cat is subject and the rest part of the sentence is called predicate, because the cat is doing some work here, and what the subject is doing or what the subject is called the predicate of the sentence, is called the predicate of the subject. That means the cat is doing something, some work here. What is the work the cat is doing here? Is sleeping in the sun. यानी जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं, और जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जा रहा है उसे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ कम टू द पॉइंट. Simple sentence is a sentence that has only one subject and one predicate and make complete sense are known as simple sentence. जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, जिसका खुद का एक कंप्लीट सेंस निकलता है, जिसका खुद का एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. इसका पैटर्न जो होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस इज गिवन हियर. With or without phrase, that means phrase is not necessary, we can either use it or not. Subject is essential, verb is also essential. With or without phrase, object complement. That means subject verb is important, it is necessary. This is the pattern of सिंपल सेंटेंस. यहाँ पर फ्रेज का हम लोग यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सेंटेंस में आएगा ही, होगा ही, इसका यूज़ करेंगे ही हम. वी मस्ट यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट वी हैव टू यूज़ फ्रेज. Look at this example. He felt happy. Here he is subject, felt is verb, and happy is complement. Now I want to tell you something about complement. What is complement in the sentence? Complement is used to complete the sentence. Complement is used to complete the sentence. When the sentence is incomplete, we use complement we use complement to complete the sentence. Here happy is not object. happy यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कंप्लीमेंट है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है. तो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट.
according to this structure, we have formed this sentence. Subject, verb, complement. So this is simple sentence. This is called simple sentence in English. On hearing the news, he felt happy. Here, on hearing the news, two sentences I have written, two examples I have given here. In the very first example, we haven't used any phrase. We haven't used any phrase. But in the second sentence, here we have used phrase. On hearing the news, this is the phrase. So phrase, he is subject, felt is verb, and happy is complement. So this is the pattern of simple sentence. I have few pieces of glass. Subject, verb, and here object with phrase, yani phrasal object. This is called also phrasal object. Here I have also written this in the structure of simple sentence, with or without phrase, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ भी हम फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है कि फ्रेज का यूज़ हमें करना ही है. बट सब्जेक्ट और वर्ब इज़ इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ सेंटेंस में होगा ही. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द sentence to form simple sentence. Come to the next one, that is compound sentence. A compound sentence is made up of two or more clauses which are independent of each other. They are of the order or rank and can stand on their own. They are coordinate clauses. A compound sentence is made up of two or more clauses which are independent of each other. Compound sentence is made up of two or more clauses. Compound sentence जो है वो दो या दो से अधिक clauses से बना होता है. वो दोनों clause जो होते हैं वे खुद पे डिपेंड रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, सॉरी, खुद which are independent of each other, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं वो. They do not need to depend on each other. They are completely independent of each other. They are of the order or rank and can stand on their own. यानी उनका वो खुद से अपना मीनिंग क्रिएट करते हैं. They do not need to depend on anyone. So they are coordinate clauses. इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. हियर आई हैव रिटन द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लॉज, द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज इज मैन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्रिंसिपल क्लॉज. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज. यानी दीज टू मैन क्लॉजेज, दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाय दीज कोऑर्डिनेट कंजक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते क्या क्या हैं? येट, बट, फॉर, शो, एंड, और, नॉर. these are some coordinate conjunctions which we will use, which we generally use in order to join the two independent to man clauses. This is the structure of independent clause, man clause. Subject, verb, object. Subject, verb, object. This is the structure of man clause. Now look at these two examples where we have used two man clauses, and these two man clauses have been joined by these coordinate conjunctions. He heard the news, so he felt happy. He heard the news, so he felt happy. Here these are two man clauses. This he
heard the news, he felt happy. These are two main clauses, and these two main clauses are joined by these coordinate conjunctions. These two main clauses have been joined by this conjunctions. So the student won the match, the coach was happy. Here again, these two principal clauses, these two main clauses, these two independent clauses have been joined by and. So here and is coordinate conjunctions and so is coordinate conjunctions. So coordinate conjunction is used to join two independent clauses, two main clauses. So this is compound sentence in which we use coordinate conjunctions in order to join two independent clauses, two main clauses. Complex sentence. This is the pattern of complex sentence. This is the structure of complex sentence. Main clause, subordinate conjunctions. Now here in complex sentence we will use subordinate conjunctions to join the different clauses. We will use subordinate conjunctions, but in compound sentence we use coordinate conjunctions in order to join the two independent clauses to main clauses. But in complex sentence we will use subordinate conjunctions. So this is the pattern and structure of complex sentence. Main clause, after that subordinate conjunctions and plus subordinate clause. There will be more than two subordinate clauses. There will be more than two subordinate clauses in complex sentence. One main clause. Main clause means independent clause or principal clause, as we have learned in compound sentence about the independent clause. So the pattern of the complex sentence is main clause, subordinate conjunctions and subordinate clause. And again, here I have written only one subordinate clause in this pattern. But I want to tell you students, there will be more than two subordinate clauses in one complex sentence. Or we can write the pattern in some other form also. We can start the structure with subordinate conjunctions plus subordinate clause and after that finally the main clause. यानी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज रह सकते हैं, और ये मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो है हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं। और इसके पैटर्न को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टार्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, after that subordinate clause, thereafter we will use main clause. So students, there are some subordinate conjunctions here I have written. Look at these subordinate conjunctions carefully: after, before, although, if, since, because, as, unless, though, where, who, why, when, that, wherever, whereas, while, whenever, till, until. So these are subordinate conjunctions which are used to join one main clause or more than two subordinate clauses, which are used to join different clauses to each other. So these are subordinate conjunctions which are used to join the two different clauses. One is main clause and other is subordinate clause. So here look at these some examples students, which will help you to know how to join main clause with subordinate clause with the help of subordinate conjunctions. These two examples
will clear you everything. Will clear everything. I don't know why he is crying. Here I don't know is man clause, because it is independent clause, and he is crying. Why he is crying? This total one is subordinate clause. Okay, so these two sentences, I don't know he is crying, here these two sentences have been joined by this y. This y is subordinate कंजक्शन, यानी ये दो सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा जोड़ा गया है. आई डोंट नो व्हाई ही इज क्राइंग, इसमें से ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट जैसे प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो खुद पे अपने वो इंडिपेंडेंट रहता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है. बट सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए उसको प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. जैसे ये लिखा आई डोंट नो, here why he is crying, why he is crying, the meaning is not clear. If I write only this sentence why he is crying, we do not get the clear meaning of this sentence. We do not get the meaning of this sentence why he is crying, because this sentence is totally incomplete. So subordinate clause always depend on principal clause to make its meaning clear. इसीलिए जो है द अदर नेम ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज. इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. तो ये पैटर्न हो गया आई डोंट नो मैन क्लॉज हो गया. देखिए मैन क्लॉज, उसके बाद ये वाई जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और ये ही इज क्राइंग ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. वाई ही इज क्राइंग टोटल आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. वाई ही इज क्राइंग इज टोटल सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये दो सेंटेंस को हम किससे कनेक्ट किए हैं, किससे ज्वाइन किए हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन किए हैं. व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही फेल्ट हैप्पी. देखिए लुक एट द अदर पैटर्न ऑफ complex sentence. We start the other pattern with subordinate conjunctions. After that we have written here subordinate clause, and finally the main clause has come. So this is the second pattern, not second pattern. That means we can form complex sentence with this pattern also. So when he heard the news he felt happy. When he heard the news, this is subordinate clause, and here we have started the sentence with subordinate conjunctions as per the given structure. When he heard the news he felt happy. जब वो इस न्यूज़ को सुना तो वो खुश हो गया. तो ये आपका है he felt happy, आपका हो गया मैन क्लॉज. देखिए मैन क्लॉज सबसे लास्ट में आया है. ये मैन क्लॉज सबसे लास्ट में आया स्ट्रक्चर. तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं. इसका पैटर्न दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो मैन क्लॉज मैन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मैन क्लॉज. तो द टॉपिक इज ओवर माय डियर स्टूडेंट. आफ्टर दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो I will teach you the different uses of simple sentence, compound sentence and complex sentence in different way. Till then take care of yourself and thank you very much and have a nice day ahead.